will lead our state and as well as the central. Regional concerns, they will not be overpowered if we are to synchronize both the elections. Why? Because many youth will be there. There are a lot many educated population right now who will look into it and make sure that they do prioritize the local concerns. And well, this will actually be a significant step to development of India. So I am in agreement of one nation, one election. Thank you. So now it's the time for ID number 73 to share her views. Good afternoon, all the dignitaries and my fellow mates present here. Today, I want to share my views on the topic One Nation, One Election. One Nation, One Election is a transformative idea that could bring efficiency, stability, and economic contribution. If implemented, it would be a significant step towards the mission of Viksit Bharat. The policy One Nation, One Election was suggested by the committee, which was under the former President Shri Ramnath Kovind ji, to examine or to check the possibilities how the one election, one nation works. India, the world's largest democracy, holds election at multiple levels: the Lok Sabha elections, the state assembly elections, and the local body elections. These elections conducted at different levels at different times. The cycle of continuation of these political activities leads to the various problems occurring in the society. The idea of one nation, one election proposing the synchronizing of Lok Sabha elections and state assemblies elections. The question arises why the one nation, one election is needed. First of all, the point is cost reduction. Frequent election requires significant financial resources. A single election can save taxpayers money for the security, logistics, and administration responsibilities. Second, the minimized disruptions. Frequent elections impact governance. Leaders' focus is more on campaigning rather than formation of policy making. Third, reduced influential of money and muscle power. Continuous elections encourage excessive spending and illegal activities. A single election can curb the corruption. The holding of major decisions was in the period of MCC. MCC means Model Code of Conduct. This is the tenure from the election announcements to the elections, which only focuses on the campaigns rather than the policy making. There are various challenges also which interrupts the formation of the decisions. That the first challenge is constitutional and legal changes. The terms of Lok Sabha and state assemblies vary, requiring amendments to constitution. The second is consensus among political parties. Different various formations of the political have various another topics about the building political agreement is crucial. Third is feasibility in case of government and dissolution. If a state government collapses before its term, should fresh election be held for the state or only for the whole country? Our nation, one election is one nation is not just about saving money. It is about saving time, boosting governance, and developing the country. If we must be willing to enhance the reforms that ensure stability, efficiency, and the better holistic development of our country. We have to together, the youth of today are the leaders of tomorrow. Its responsibility to contribute their vision. Viksit Bharat 2047 is not just an agreement. It's a vision to initiate the making our country well developed. Thank you. There is one candidate, ID number 72. Sir, he has just reported. So, ID number 72. Sir, actually, I was going for the washroom, so I was waiting for you. India, an ancient and vast tradition where elections are the heartbeats of our democracy and every vote counts as the melodies of our shared future. Honorable jury, respected teachers, and my dear fellow friends, today I, chess number 72, alongside you, the citizens of India, is standing at the crossroads of history. And we share this significant movement as we imagine our future
as all of the voices come together under one single vote, or the cacophonies of the so many triumphs come under one strong and powerful slogan, one nation, one election. Well, it is not merely a slogan, but a dream for many people to envision the integrated and developed Bharat and on the path of Viksit Bharat. Well, a question arises in my mind that what exactly is this? One nation, one election, or should I say simultaneous elections? Well, it is the structure to develop the elections in such a way that the elections of Lok Sabha and the state assemblies synchronize together in the tenure of 5 years. Well, it is so game-changing, so transformative, and so controversial that it has developed. It is the greatest reform in the history of Indian electoral system, and it is not a new concept. Well, it has been going on since our freedom, but was discontinued in 1967 because of the dissolution of our state assembly under the President Rule Article 365. Well, this bill was recently introduced in 17 December 2024, where it caused an uproar in the parliament, where the BJP party states that 1.4% of the GDP will be increased by this bill, but the opposition party criticizes the same. And it has also its pros and cons. The positives include, well, the expenditure on the elections will reduce by a lot. According to the report of Times of India, 60,000 crores were spent in 2019 on the elections. And it will also reduce the frequent use of model code of conduct, which has been happening during the elections. And the challenges which I come to now, which are faced by these problems, like what will they do if the central government fails, or what will they do if the state government fails, or the biggest question, will they dissolve the state government if the central government fails? Well, these questions remains unanswered till today's time. And now I would like to conclude by saying that some positive words. एक देश एक चुनाव का पैगाम है, हर वोट में छुपा उजाले का अरमान है, एकता के संग चले हम सभी मिलकर, नई सुबह लाना हर दिल में आसान है. These are the words which are said by a very representative position in India, and this widespread public and political support, I support this with every regards. Jai Hind, Jai Bharat. So now I invite ID number 75. Respected dignitaries, hold on. Respected dignitaries, teachers, and dear friends, good afternoon to all. Today I am honored to speak on a revolutionary idea, one nation, one election, a step that can transform India and pave the way for Viksit Bharat. This reform is not just about elections, it is about good governance, economic efficiency, and a better future for all Indians. It is a step towards Viksit Bharat, a developed, empowered, and united India. As we all know, elections in India take place frequently. Lok Sabha, state assemblies, and local bodies all hold election at different times. While elections are crucial for democracy, but holding them separately creates several challenges, such as frequent disruption in governance. Second, huge financial burden. Conducting elections separately costs thousands of crores. The 2019 Lok Sabha election alone cost around 60,000 crores. Imagine how many schools, hospitals, and roads could be built with that money. Political instability. Frequent elections encourage short-term populism rather than long-term planning. Many parties focus on freebies and vote bank politics instead of sustainable development. Government often focuses more on election than policy making. For example, in 2022, when elections were held in multiple states, many infrastructure projects were delayed due to the model code of conduct. How one nation, one election will benefit India? The first point will be
Strengthening governance for women empowerment. With a stable and focused government, policies related to women's education, employment, and safety can be implemented without delays. For example, the Ujjwala Yojana, which provides LPG connection to women, could have expanded. The Women's Reservation Bill, which aims to increase female representation in politics, can be implemented more smoothly in a stable political environment. Rural development and farmer welfare. Rural development projects often face delays due to repeated elections. One nation, one election will ensure seamless execution of rural electrification, road connectivity, and agricultural reforms. Resolving public issues more effectively. Frequent elections shift focus from public welfare to political campaign. With a single election, government can focus on improving healthcare facilities, building roads and infrastructures, enhancing urban and rural sanitation programs. So I'd like to conclude that point. One nation, one election is not just about voting. It's about nation building. It is about ensuring good governance, economic stability, women empowerment, child welfare, rural development, and a stronger democracy. It is about making a India Viksit Bharat, an India that is efficient, empowered, and unstoppable. Let us support this visionary step and work together for a better, brighter future. Jai Hind. Thank you. There is an announcement for the participant that I have got data from registration counter that ID number 43, the student has reported at the registration counter but not in the hall. Is there any ID number 43 available? Then ID number 50, the student has also reported at the registration counter but has not come to the hall. ID number 50. 50? Okay, one more student, that is ID number 64. Is ID number 64 there? Okay, so I invite ID number 50 to present her views. Good afternoon. My ID number is 50. ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਵੋਟ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਵੋਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਵੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਵੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ID number 64. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ID ਨੰਬਰ 64 ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਵੋਟ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Sir, ID number 43 has also reported. So I invite ID number 43 to share her views. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ 43 ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। 2029 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 18 ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1952 ਤੇ 57 ਤੇ 1962 ਤੇ 1967 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਧੰਨਵਾਦ। With this was the last student of the today's event. Now I request one of the jury member, that is Professor KPS Shante, to provide the concluding remark of the event and guide the students for their future perspectives. Saran nu sat shri akal again, good afternoon, and my worthy colleagues, judges, fellow judges, the hosts, organizers, fellow participants, fellow because even I am speaking. And I am still a student. I still think sometimes, you know, the age is just a number, it's more in the mind. मैं ज़्यादा नहीं बोलांगा. Usually I am used to giving observations about the speeches, about the performances, what you spoke well and what you could have spoken much better. समझ आ रही सबने English? ये पंजाबी, I can speak Hindi, Punjabi, all languages, but सब तो पहला था organizers ਨੂੰ बहुत thanks for hosting the event. All concerned, the Government of India, the university, the departments, Madam Jasveer, who called me yesterday and offered this invitation. It's a pleasure to be here with you all.
सुन के चंगा लग्या। बड़े सालों तो 40 सालों तो मैं जा रहा AAU एंड एसोसीएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नैशनल लेवल ते एज ए क्विज मास्टर एंड एज ए जज फॉर लिटरेरी इवेंट्स। उत्थे रूल्स थोड़े जे वक्रे होंदे बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू टेक ए पेपर। बड़ा क्लीयर लिखिया होंदा कि पेपर आई नोटेड टुडे कईयां ने हत्थां ते लिखिया सीगा, डायरियां मोबाइल सब चल रहा सीगा। लैंग्वेज in the universities, youth festivals, in the good debates all over the world, language purity is very important. If you are a speaker, you have to know your language well. You are not to mix up your language. खिचड़ी बहुत वधिया डिश है, बहुत चंगी, बहुत हेल्दी डिश है, लेकिन प्योरिटी दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल खिचड़ी इज़ नॉट ए ग्रेट डिश बिकॉज जो मर्जी पाई चलो, जरा मर्जी बना लवे खिचड़ी। यू कैन पुट एनीथिंग, कोई सब्जी, कोई दाल, कोई मीट शीट चिकन मच्छी जो मर्जी पाई जो खिचड़ी बनाई चलो। तो डिबेट या स्पीच या यूथ पार्लीमेंट ਆਪਾਂ ਹੁਣ खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन खिचड़ी बनी जा रही है। दैट्स ओके, क्योंकि रूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਸੀ लिखा होया। I could give you a lot of observations about how you could have spoken better, बट क्योंकि स्पीच कंपीटिशन कल भी चलना है, ऑलरेडी मेरे माइंड से तो मैडम जसवीर चहल ने बड़ा वधिया टाइमली रिमाइंडर दोबारा दे दिता कि कल भी कंपीटिशन होना, इस करके अज कमेंट्स कोई दईए या ना दईए। तो मैं क्या आई विल बी केयरफुल, ऑलरेडी मैं सोच लिया कि आई विल बी केयरफुल नॉट टू गिव यू हिंट्स। ऑल आई कैन टेल यू इज़ यू पीपल स्पोक वेल, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक मैं थोड़ी कॉन्फिडेंशियल गल शेयर कर रहा अपने रिस्क के उत्ते विद ड्यू अपॉलोजीज टू यू। असी हाले डिस्कस नहीं किया अपना, लेकिन मेरे मुताबिक 4 ही बच्चे जड़े उपर पद्धर ते ठहरते हैं, जड़े बैठ के सिर्फ पेपर रीडिंग करी जा रहे इतने मोबाइल तो पेपर तो, नॉट रियली इन द टॉप कैटेगरी। बट रूल्स कहते हैं कि दे आर साइलेंट ऑन दिस, सो यू कैन डू इट। I should not have disclosed this, but I am disclosing कि 4 बच्चे मेरे को बड़े क्लीयर सीगे। होपफुली बाकियां नाल साडी राय मिल जाएगी एंड 10 लेने असी टोटल, कल भी तो अज भी 10 निकले आएंगे, यूनैनिमसली निकले आएंगे। एक चीज़ बेटे मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कंक्लूडिंग तौर के उत्ते, थोड़ा ध्यान नाल सुन लेना। डिटेल्स अज नहीं, अगर कहोगे तो मैं कल दस दियांगा। कई बारी कई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया दे कॉल मी फॉर वर्कशॉप्स। I do 1 hour, 2 hour, 4 hours, 1 day, 2 days, depending on the need. I can do it from 2 hours to 2 days, 3 days workshops. Money is never a matter with me. I just want the country to be happy. I've given up my American green card. I've given up a lot of careers to come into teaching. पैसे करके नहीं आया कदे भी। तो एक चीज़ सिर्फ मैं कहनी चाहूँगा कि थोड़ा मेहनत करो। मेहनत का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। आज तो 5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल मी फ्रॉम दिल्ली। आई गॉट ए कॉल। आई बीन गोइंग फॉर नेशनल फेस्टिवल सिंस 89। 4-5 साल पहला कॉल आई कि सर तुसी जिथे भी जाते हो, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, वेरेवर यू गो, फीडबैक मिलता कि वो सर बहुत चंगा बोल के कि उन्होंने बड़े अच्छे टिप्स दिते। तो कहते असी क्राइटेरिया बनाना जजमेंट वास्ते कि लिटरेरी आइटम को जज कितना करना, हाउ डू वी जज, ऑन वट पैरामीटर्स डू वी जज। अज भी जोड़े मिले उसने इतने आके देखा, दे आर फाइन ओके, लेकिन आई थिंक दे कैन बी बेटर। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली तो कॉल आई, यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं 1 महीना रिसर्च की अपनी। आई वॉज ऑलरेडी वेरी हैवीली इनटू इट। ऑलरेडी पीपल वर सेइंग कि सर थोड़ी जजमेंट कोई क्वेश्चन नहीं करता, थोड़ी फाइल ओपन होंगी है, कोई मर्जी जो मर्जी आके पुछ लवे, कदे भी कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं रेज होंदा। तो कहते कि तुसी क्राइटेरिया दिओ 50 नंबर का, जिहदे विच असीं यूनीफॉर्मली सारे इंडिया दे विच यूनिवर्सिटीज़ दे विच जजमेंट कर सकीए। फॉर 1 मंथ आई स्टडीड। मैं कोई टॉप दी यूनिवर्सिटी नहीं छड्डी। हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, शिकागो, कैलीफोर्निया, यू नो इंडिया दे टॉप दे स्कूल्स, मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफन्स, डून स्कूल, सेंट योर लॉरेंस स्कूल स्नार, सेंट जॉन्स चंडीगढ़, almost 50-60 universities, colleges from all across the world. I studied how do they judge public speaking.
एंड यू नो किसी भी दो दी जजमेंट शीट बराबर दी नहीं सीगी. अज वाली इज़ अगेन डिफरेंट, किते 15 किते 10 किते 25 टोटल 100 चों. सो हर यूनिवर्सिटी की जजमेंट का क्राइटेरिया अलग अलग है. आई स्टडीड इन डिटेल, 30-40 पेज मैं लिखे है जेडे यू नो आई मेड ए रजिस्टर बोथ साइड्स कर करा के 20 पेज 6 पेज 2 पेज 1 पेज अद्धा पेज 1 पैराग्राफ. आई वॉज वेरी गुड इन राइटिंग, सो आई रिड्यूस्ड ऑल दैट कंटेंट टू हाफ ए पेज देन 1 पैराग्राफ. आई गॉट ए कॉल अगेन कि सर सानू सिर्फ 6 वर्ड्स दियो, 5 वर्ड्स दियो. हाउ डू यू जज गुड स्पीच, गिव अस 5 वर्ड्स. सारी महीने की पढ़ाई की कराई, सालों की मेहनत, आई ब्रॉट इट डाउन टू 5 वर्ड्स. लेकिन वो 5 वर्ड जोड़े सीगे एक एक वर्ड के पिछे 20 चीज़ां होर सीगियां. सो जो मैं जजमेंट कर दूँ तो मेरे माइंड 80-100 गल्लां फिरदियां होंदियां. आई लुक एट 100 थिंग्स व्हेन आई एम इवैल्यूएटिंग, बट फाइनली वी गिव मार्क्स आउट ऑफ 50 इन दी नैशनल्स. तो अज थोड़ा जिहा क्राइटेरिया डिफरेंट सीगा. आई डोंट नो ये सारी थावां ते इदां ही हुंदा या इस जोन दे विच या किस तरह हैगा, क्योंकि हर थां ते अलग अलग हुंदा है. But there needs to be a little more uniformity in all this. So how do we judge, how do we speak better? That's a very lengthy topic. किसी और टाइम, क्योंकि आज मैं कह देता था कल वाले वास्ते वो हिंट मिल जाएगा, वो गलत हो जाएगा. सो आज वो 5 वर्ड्स मैं नहीं दसांगा. अगर लोड़ पई, अगर मौका बनया तो कल मे बी आई कैन टॉक अबाउट इट. एंड आई वुड रिक्वेस्ट माई अदर को जजेस ऑल्सो टू शेयर देयर व्यूज़. थोड़े च बेटा कोई पूछना चाहता तो कोई चीज़ पूछ लो, बिकॉज आई नेवर फिनिश एनी इंटरैक्टिव सैशन विदाउट ए क्वेश्चन. मेरी आदत है, मेरी क्लास दे विच भी कदे भी सैशन खत्म नहीं होंदा, कोई क्लास खत्म नहीं होंदी जब तक किसी का कोई डाउट क्लीयर ना हो जाए. कुछ पूछना है, किसी ने कोई डाउट हैगा तो पूछ लो. अदरवाइज माई थैंक्स एंड टू ऑल दी पीपल, टू द टेक्निकल स्टाफ, बहुत अच्छा काम सारे का. एंड थैंक्स वंस अगेन. बट if anyone has a question, yes. You were the one who came late who got -5. Okay. I told that was just a joke. You know, there is no life, we have only one life. I believe in 100 and 1,000 things. One of them is there is no life without wit, no life without humor. Good humor is always good. Pucho. I would not comment on this because I am on the judgment seat. If I give you my opinion, you might get influenced कि सर तो इतना कह रहे हैं तो इसी सर के मुताबिक बोल दिए. No, I am not worrying. I don't worry. I don't believe in worries. But I am careful. There's a very famous quotation. I am not a pessimist. You know, thousands of students with me on various social media platforms and my own students. Many of them in civil services, top generals. 6 of them are army generals now. UPSC member is my geography student. Periyat Lake milda hai. He was DGP of CASF, IB and CASF. Now he is a UPSC member. They all tell me, sir, thode varga positive banda nahi dekhya. Madi to madi negative cheez cho bhi I always think positive. So one of the quotations I am telling you is कि I am not a pessimist, but I like to carry my umbrella on a rainy day. Okay. So I would not tell you what I think. But good question nevertheless. Any other thing? You know, one thing, I always believe in the students. I always believe in the future. If I tell you about hundreds of incidents, one incident at a qabr in Delhi, I have faced death at least 12 times. Seconds away from death. 1 second and you're gone. Delhi, I could have been chopped off. Seconds away. And the person, I talked to him and eventually he was crying. The person who could have killed me was crying. He said, Allah Miyan, आप जैसा इंसान हमने नहीं देखा.
आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी आज. So I always believe that students have potential. They have huge potential. Today I saw many of, I was noting down, this person, this girl, this boy can do so much better. Sahi guidance mil jaye, you can do so much better. But sometimes it takes time. Yes. ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जोश बंदा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यही करिए, मैं बड़ा जोश है, भंगड़े चो फर्स्ट आ जाएगा. जोश था बड़ा जी, मैं तो फट्टे चक दूंगा, मैनू भंगड़े पहला प्राइज दो, दे दोगे? की देखोगे? एनीवन? It is your steps, it is your movement. It's the body movement that is number one. Body the movement, steps, थोड़ा you know, जोश बढ़िया गल्ला लेकिन फर्स्ट थिंग यू विल लुक फॉर इज योर कोऑर्डिनेशन, योर मूवमेंट, योर बॉडी लैंग्वेज. प्ले विच की देखते पहली चीज, गाने विच की देखते पहली चीज. आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन. जो कोई प्ले देखते हो, ड्रामा देखते हो, की देखते हो सबसे पहला? मैसेज तो मैं किताब पढ़ के भी दे दूंगा. आई कैन राइट अ स्टोरी एंड कन्वे ए मैसेज, बट इज दैट ए प्ले? नो. माई क्वेश्चन इज थिंक. यू हैव, रब ने सब नूं दिमाग दिता, सोचो. तुसी क्या मैसेज, आई कैन राइट अ स्टोरी एंड कन्वे ए वेरी गुड मैसेज, बट एम आई परफॉर्मिंग ए प्ले? आई एम मेकिंग यू थिंक. इन ए प्ले what do you look at? The main thing. You're acting. You're acting. Acting involves expressions, dialogue delivery, confidence, body movement, body language. There can be many other things. But one word you look for in a play or in a movie is one word. You're acting. Language is there, but is language तो मैं लिख के दे दूंगा. I'll write a beautiful story, beautiful script. फिल्म की स्क्रिप्ट लिखती, बहुत सोहनी लैंग्वेज है. Is that a movie? It's a story. No, but when you watch a movie, what is the one thing you are looking for? Yeah? Baseline. So then give the award to the story. Why give this prize to the film? When you are watching a documentary or a film or a play, the number one thing you look for is what? If you are looking for a story, then you read a story. Why watch a play? My answer would be, you can disagree with me, but my answer would be you are acting. If the acting is good, it can carry a bad story also. If the acting is bad, even a bad story gets slaughtered. In a play, you look for acting. So now coming to your question, कि language, is it important or not? Public speaking is what? What is public speaking? Is it acting? Is it acting? Waiting for lunch, okay. Waiting for lunch. बेटे सॉरी, मैं टाइम कई बार कोशिश करना कि थोड़ा लंबा, लेकिन लंबा हो जाता है, बिकॉज आई वॉन्ट योर ब्रेन्स टू थिंक एंड डेवलप. लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग itself means speaking. Speech is your voice, your language. It's important. अगर मिक्सचर अलाउड है तो ठीक है, अलाउड है. अदरवाइज गुड लैंग्वेज इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. ठीक है बेटा. आई गॉट ए मैसेज की बस करो. हम एक क्वेश्चन और आ गया, लास्ट क्वेश्चन. ओके,
मेरी आदत है मैं questions, you know, बच्चे जो आते हैं ना एक curiosity होती है mind दे विच, they have to be answered. Please speak a little loud and clear. You spoke well, but you fumbled a bit. At one stage, you fumbled very badly, but we can ignore one step. Not today. If you are here tomorrow, maybe tomorrow or some other time we can. My students, trained by me, my own students have won the nationals inter-university many times. Debate, elocution, creative writing, quiz. Many universities from other places, they call me to conduct a workshop. Some people are in touch on Insta or Facebook, and if I get time, they won the National Youth Parliament at least 5-6 times. They won the national debate at least 6-7 times. But it needs time, not now. You are very good. Thank you so. But I said that's the last question. Thank you so much. God bless you all. I'm very sorry, sir, that I had to interrupt you in between. So I extend my heartfelt thanks to the jury members who have spared their valuable time. Now there is one announcement for the students that results will be declared tomorrow and certificates will also be distributed tomorrow. And all the students must hand over their TA forms at the registration counter. Now I invite everyone for lunch. Hanji, all the participants are going to get the certificates, the participation certificates. TA as well as feedback pro forma, kindly everyone hand it over at the registration counter today only. Okay? And participation certificate will be given to all the participants and that will be distributed tomorrow. Fine? So everyone is requested to come tomorrow also. Now everyone please join for the lunch, jury members.